Hello everybody, welcome to iExamBee's LegalBee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. Embrace the iExamBee learning experience. If you have any queries, do reach out to us by writing us an email on hello@iexambee.com. Queries relating to what? Queries relating to law examinations, law exam preparation, career opportunities after you complete your LLB, LLM, while you are doing your LLB, or you want to join the LLB, LLM course and whatnot. You can also write to us in the comment section of this video. मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है that is relating to what to make a career in law. So if you want to make a career in law, you can watch all the videos of this series as this will help you understand about the relevant examinations that are there after law. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बात की थी अबाउट सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट एंड ऑल्सो आई कवर्ड CUET PG examination earlier. That notification is already out. Now I will be discussing about the CUET UG examination. That is to make a career in law, that is LLB if you want to join, by the Common Universities Entrance Test, which is organized by NTA itself. But ये examination अभी तक announce नहीं हुआ है. But like on a yearly basis this is being done. So I'm going to give you the information keeping in mind the previous year pattern and the dates as well. So मैं tentative schedule previous year का, that is actually 2023 का जो schedule है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ. So आप वो सारे डिटेल्स देख लीजिए. बिकॉज क्या होता है एग्जामिनेशन एक महीना पहले ही अगर फॉर्म आता है तो you don't have enough time to prepare. So that time should not be wasted. You utilize your time and keep on applying wherever you want to complete your graduation in law, wherever you are able to get seats. So all these things will be helping you definitely. And if you have anything, any queries, any expectations from us, do write to us, do reach out to us. We will try to fulfill the same. So this is the official website of Common University Entrance Test CUET UG 2023. एक्चुअली मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है आपके साथ. सो यही वेबसाइट पर जब अनाउंस हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल गेट ऑन दिस वेबसाइट ओनली. आई हैव ऑल्सो शेयर्ड द लिंक ऑफ दिस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. PG का ऑलरेडी आ चुका है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. UG का अभी आना में है. तो उसकी भी टेंटेटिव डेट्स अगर आप देख लोगे वो एक्चुअली फरवरी में आया था लास्ट ईयर. ये लास्ट ईयर का पब्लिक नोटिस है. 9 फरवरी 2023 को नोटिस आया था. सो यू डोंट हैव टू वेट टिल दैट टाइम. आप टेंटेटिवली इसका आइडिया लेकर चल सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. जब भी फॉर्म आएगा यू कैन गो फॉर इट. एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन द मे मंथ ओनली जनरली. सो ये सारे टेंटेटिव डेट्स है. मार्च तक वो फॉर्म अवेलेबल होता है एंड देन एग्जामिनेशन आपका मई में कंडक्ट हो जाता है. सो का रिजल्ट भी टेंटेटिवली उसके बाद कुछ दिनों में आ जाता है. So this is what is the scheme of the examination. इसके एग्जामिनेशन की सॉरी इस एग्जामिनेशन की अगर आप स्कीम देखोगे, सेक्शन 1A 1B there are 13 different languages which are there in the first A section and 20 languages in the first B. So you can choose the languages. 40 questions you have to attempt out of 50 in each language. And जो आपका डोमेन एरिया है उसमें 27 सब्जेक्ट्स है. उसमें से आप लीगल स्टडीज़ चूज़ कर सकते हैं. उसका सिलेबस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मैं जल्दी आपको बता दूंगी. फॉर एनी UG प्रोग्राम दे आर गोइंग टू सी विच एवर द यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग. फॉर दैट देर विल बी अ जनरल टेस्ट. 50 questions will be you will have to compulsorily attempt 50 questions out of 60 and it is going to be an MCQ based test. This is the same thing which is there, just the thing is that you have to डोमेन सब्जेक्ट जो होगा आपके 12th सिलेबस के हिसाब से ही होगा. आपका UG का प्रिपरेशन है. जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इसके हिसाब से आपको करना होगा. एंड दिस इज व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट. लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं, ये सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है यहाँ पे. उसमें आपका एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा. सो दिस इज अ टेंटेटिव आइडिया विच आई हैव गिवन यू ओवर हियर from the information bulletin of the previous year. You can check it out. प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप ये सब चेक कर सकते हैं. एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस एग्जामिनेशन को भी परस्यू कर सकते. दिस इज द लीगल स्टडीज़. 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 यू हैव टू कंपल्सरीली अटेम्प्ट. एंड ये लीगल स्टडीज़ का सिलेबस है. जुडिशरी से रिलेटेड आपको क्या क्या बेसिक पता होना चाहिए, लॉ के क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए, आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, adjudication and alternate dispute resolution area,
ये सब बेसिक आपको पढ़ना होगा. सो यू स्टार्ट गैदरिंग योर notes from now itself if you are going to go for the exam. Human rights in India, legal profession के बारे में, legal services के बारे में, then the international context, इंटरनेशनली भी आपको पढ़ना होगा, एंड देन द लीगल मैगजिम्स. लीगल मैगजिम्स की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट उन्होंने दी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं. ये सिलेबस के कटिंग्स हैं. ये सिलेबस का PDF मैंने वीडियो के साथ अटैच कर रखा है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन ऑल्सो go through it. So this is what was about the CUET UG examination. This is what is the official link. इसको आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इस PPT को ही डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए. सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा. Start preparing if you are interested for the examination. Whenever the forms are out, fill it and go for it. All the very best. If you have any queries, do reach out to us. Don't forget to subscribe to LegalBee and prepare 50% faster with us at iExamBee.